So, today we are going to talk about the freedom of a Christian, which is written by Martin Luther. First of all, let us try to see who Martin Luther was. Good afternoon, everyone. I hope the PPT is visible. And today I have already shared the attendance link with you all. And now I'm going to talk about the freedom about the text, the freedom of a Christian, which is written by Martin Luther. Martin Luther was a German professor of theology, and he was a composer, priest, a monk, and a seminal figure in the Protestant Reformation. I'm sure most of you will be aware about what Protestant Reformation movement was. Attendance link I've already shared. Those who have marked their attendance, please reshare the link in the classroom, because when I try to do it again and again, my system hangs because there are too many applications opened. Okay, so please help me. And I have already shared, and now I'll be sharing the attendance link in the end. When 10 minutes will be left, I'll share it again. Please try to listen patiently. Okay. And Martin Luther was born in 1483 and he passed away in 1546. He was ordained to the priesthood in 1507, and he came to reject several teachings and practices of the Roman Catholic Church. You need to remember these few terms, when you are reading the freedom of a Christian. One thing is Roman Catholic Church and what was happening on the scene during those time when this text was written in 1510, and about Protestant Reformation. Martin Luther was trying to bring some kind of reform in the way this Roman Catholic Church was working. Okay, so he was challenging many of the practices which were prevalent in the Roman Catholic Church. He was trying to remove the ill practices of the church. So that is why he was even called a rebel. And in a way, he was also stopped from giving his preachings and all. So kind of boycott was done of Martin Luther by the Roman Catholic Church. And then in order to in order to get his position back, and also to explain what he was trying to do, he wrote a letter to Pope Leo X, and then he explained his position to him. And this particular text, the freedom of a Christian, was written after that. It was supplementary to that letter, in which he was trying to explain to Pope Leo what actually he means by the freedom of a Christian, or the duty of a Christian, and how a Christian life should be. So all these things are mentioned in this text that we are going to read today, and it was a kind of brief context I've given you, like why this text was written, what was his objective in writing this text, okay, and what was happening, on this Roman in this Roman Catholic Church when Martin Luther had to write this text. Okay, his theology actually challenged, like I've told you, the authority and office of the Pope by teaching that Bible is the only source of divinely revealed knowledge. As you must be aware that Protestants do not believe in Pope. They do not believe that only visiting to church will bring you some kind of salvation. They believe that word of the God is the only thing that can give you salvation. Okay, there are some comments. Theology means religious dogmas, or anything related to religion. Okay, Hindi में भी I'll keep on yes, religious practices. I'll do that. I'll do that. Please try to understand the concept. I have just introduced the author here. I don't know why is it so, because I think I'm talking quite loudly. Just wait for a second.
आप अपने फ़ोन की वॉल्यूम इंक्रीज करके देखो, बिकॉज समटाइम्स दैट इज ऑल्सो द केस. यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. I will explain everything. Yeah. So we were talking about Martin Luther, who he was and why he wrote this particular text. Okay. So Martin Luther was a German professor of theology. Okay. So during this time, during 1510, when this text was written, Martin Luther was in a way, exiled from this practice of priesthood. His position was taken back. Okay, because it was considered that he's writing against the church. He's writing against the Pope. अच्छा, आपको अगर इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो, अगर आप पंजाब से हो तो आपको पता होगा कि देयर वाज दिस मूवमेंट इन पंजाब एज वेल. When there were some people who actually talked about the mispractices in the gurdwaras. कि जो ग्रंथी थे, है ना, जहाँ वो जो टेक केयर करते हैं गुरुद्वारा की, तो वो उन लोगों ने लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था, है ना. जैसे लोगों से मान लो पैसे ले लिए और कहा कि आपके नाम पे हम ऐसे अरदास करेंगे, कुछ करेंगे, तो मतलब इस तरह की चीज़ें करने लग गए थे, है ना. तो उसके खिलाफ भी फिर लोगों ने आवाज़ उठाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए. या फिर जो बहुत सारे जैसे बाबा आ गए हैं आजकल, है ना, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसी की जो प्रीचिंग्स हैं उन्हीं को मानना चाहिए. ठीक है, तो इसी तरह की चीज़ है, आप इसको समझने की कोशिश करो. ड्यूरिंग द टाइम व्हेन मार्टिन लूथर वाज राइटिंग दिस टेक्स्ट, उससे पहले कुछ चीज़ें हो रही थी इन रोमन कैथलिक चर्च. डोमिनेंट हो गया था बहुत ज़्यादा जो पोप की पोजीशन है. ठीक है, पोप एंड सम पीपल हु वर हु यूज्ड टू फ्लैटर हिम, या उसके ऑफिशियल्स कह सकते हैं. इनका एक पूरी एक जैसे कमेटी होती है, दैट कंट्रोल द वर्किंग्स ऑफ द चर्च. ठीक है, तो जो उसके ऑफिशियल्स थे चर्च के, एंड पोप था जो, they were indulging into some kind of mispractices, ill practices. लोगों को कहना कि आप दान दो फिर आपको साल्वेशन मिलेगी, आप हर रोज चर्च आओ. तो बहुत ज़्यादा जो इस तरह की डोमिनेशन थी of the pope and the officials and the church. Martin Luther was protesting against it. That is why Protestant Reformation, है ना. So he was trying to reform, bring some kind of reforms in the workings of the church. That's why Protestant Reformation. Although Protestant does not only mean like the protest, but in a way it has come to, with the passage of time, take that meaning. So now, this religion was divided into two kind of faiths. One was the Catholic and the other was Protestant. Catholics are the ones who believe in the, can you please help me ma'am, when can I get my lecture course content to, you are not interested in what I am teaching right now. When I told you, explained, कल मैंने आधा घंटा इसी चीज़ पे लगाया, आपको नोट्स मिल जाएंगे, सॉफ्ट कॉपीज भेज दूंगी मैं. Please try to understand what I'm trying to explain. 145 people are here and you're only concerned with other things. अटेंडेंस लिंक मैं एक बिगिनिंग में शेयर करती हूँ, एक मैं एंड पे करूँगी. इन बिटवीन नोबडी विल आस्क मी फॉर अटेंडेंस लिंक. थिंक अबाउट पीपल हु हैव नो टाइम, कितनी मुश्किल से आते हैं, सुनते हैं, है ना. तो फिर मतलब आप समझने की कोशिश किया करो. एक स्लाइड भी नहीं कंप्लीट करने दी अभी तक आप लोगों ने. So what he was trying to do, he was trying to bring some kind of change in the working of the church, है ना. कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, जब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो कोई ना कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है. एंड सेम थिंग मार्टिन लूथर डिड. ठीक है, तो वो जो आप टेक्स्ट भी पढ़ने वाले हो उसमें भी वो यही बातें करेगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हो रही थी, है ना. कि वो कहता है वर्क्स जो हैं, सो कॉल्ड, आप कहते हो कि आपने कुछ गलत कर दिया. लोग चोरी चकारी करते हैं पर जाके गुरुद्वारे में मत्था टेक के आते हैं और पैसे चढ़ा के आते हैं, उनको लगता है कि गॉड विल फॉरगिव देम. बट मार्टिन लूथर इज लाइक, नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे. ठीक है, फेथ अलोन कैन ब्रिंग यू साल्वेशन. ये उसका एम्फेसिस है टेक्स्ट में, हम इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे, है ना. पर एट द आउटसेट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट ही वॉज ट्राइंग टू protest against
all kind of mispractices, ill practices in the church. ठीक है, and that is why पोप एंड द अथॉरिटीज एंड द ऑफिशियल्स ऑफ द चर्च दे वर अगेंस्ट हिम. और उसको ये जो ही वॉज ऑर्डेन्ड विद priesthood in 1507. दिस पोजिशन वॉज टेकन अवे because they were like he is preaching against the church. So in this text he is, this text is written to Pope Leo X and is a kind of explanation of what he is trying to say. Okay, so this is what most of the critics have written about this text, the freedom of a Christian. They say it is the most perfect expression of Luther's Reformation understanding of the mystery of Christ. Some would say the freedom of the Christian is a confession of Christ, and some would say Christian freedom is a gift from Christ himself. So these are the various comments people have written about this particular text. So now I'll start talking about the text. ठीक है, in between if you want to ask something you can write your comment in the chat box. ठीक है, it should be related to the text. Like if there is some question that you want to ask you can write that in chat box. मान लो कुछ आपको नहीं समझ में आया या कुछ आप मुझे चाहते हो कि मैं explain करूँ, or you can write your questions and I'll give you 15 or 10 minutes in the end. So now the first idea that he takes up in this text is Christian freedom. In the meantime I'll also share the link of this text for you so that you can have a look at it. I'm just going to share it on your group. Just give me a minute. I'm just WhatsApp MA semester 1 on both your groups. I've shared it. You can click on this link and check out the text of this this text that I'm teaching you. Okay, so now Christian freedom, the first concept that he takes up is the Christian freedom. So now I'll open the text from here and I'll also share this text. You will be able to see like on which line I'm reading. Freedom of a Christian applies changes, and here is the text. Okay, I hope the text is visible. I have marked the important lines in yellow. So the first idea that he takes up in this text is the Christian freedom. So what does he mean by Christian freedom? ठीक है, क्रिश्चियन फ्रीडम क्या होती है और कैसे अटेन की जा सकती है. आपको मैंने इस टेक्स्ट का लिंक भेज दिया है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे. ठीक है, और अब जो सामने खुला हुआ है वही टेक्स्ट है जो मैंने आपको भेजा है. ठीक है, सो ही सेज Christian faith has appeared to many an easy thing. Not a few even reckon it among the social virtues as it were, and they are like people are confused about what Christian freedom means. Okay, so here he will try to explain it. So the first important idea he takes up is, he says, a Christian man is the most free lord of all and subject to none. A Christian man is the most dutiful servant of all and subject to everyone. Then he is like, this at the outset may sound a contradictory statement, है ना. क्या होती है क्रिश्चियन फ्रीडम, पहला आइडिया है ये उसका. वो कहता है कि क्राइस्ट ने ऐसे हमें समझाया कि जो क्रिश्चियन मैन है वो सबसे वो हर तरह की बंदिशों से आज़ाद है और वो किसी का सर्वेंट नहीं है. पर एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो सेड दैट कि जो क्रिश्चियन आदमी है, जो क्रिश्चियन मैन है, इज़ द मोस्ट ड्यूटीफुल सर्वेंट ऑफ ऑल. बट देन ही इज़ लाइक, हाउ टू these are contradictory statement, how will you make sense of it? Is there any question here? WhatsApp group link, oh my God. Anyways, I'm sure like this text is visible to you all on your screens and I'm reading it from here, है ना. तो अब ये थोड़ी समझने वाली बात है. तो वो कहता है कि कैसे फ्री है और कैसे इट इज़ द लॉर्ड ऑफ ऑल, लॉर्ड ऑफ एवरीवन, हाउ क्रिश्चियन मैन इज़ फ्री. ठीक है, तो वो कहता है कि क्योंकि a Christian man believes in or has faith in God that sets him free from all kind of bodily or societal constraints. Okay,
and this is how he is the lord of all. But on the other hand, how Christian man is the dutiful servant is like, since for example, they say love thy neighbor. So when you love somebody, you feel like doing things for them. So in this manner, a Christian man becomes the most dutiful servant. The way Christ was. They were like, Christ was both a man and God. In our yesterday's text as well, this particular term was mentioned. So here again, Luther also says that, if you love, people around, then you will feel like serving to them. So it is in this context, this Christian man is the most dutiful servant. Okay. Are there some question? The freedom of a Christian, the freedom. आपको समझ में आ रही है ना ये बात? A Christian man would be most free if he or she has faith in God. Okay, in this way he would attain the freedom, and this is an idea that is going to reiterate in the entire text. Okay, and he is like, yes, you would be the most dutiful servant, because when you love your people around, you would feel like working for them, and this is how you become a dutiful servant. And then the next idea that he takes up is about the twofold nature of man. Okay, he says there are two kind of like interpretations, or if you have to look at a man, it is in two ways that we do: inner man, outer man, or a spiritual man, or a bodily man, or soul and body. Even in, you say, Indian theology, human is described in these two terms. ठीक है, आत्मा और जो शरीर है ना, तो उसी की बात कर रहा है, inner man and outer man. And how he would say that no matter what you're doing to your body is in any way going to impact your soul. ये उसका आइडिया है ना, कि आप अपने कपड़े अच्छे पहन रहे हो, अच्छा खा पी रहे हो, पर how does that impact your soul? It won't. So by using this idea, he is actually criticizing the practices of the Roman Catholic Church during his time. Okay, the way those people were living very lavish life, and the way they were making people to invest a lot of money and other things into the church, and the way priests used to kind of exploit people on the name of God. तो ये सारी चीज़ें करके वो दिखा रहा है कि जो आप बाहर चीज़ें कर रहे हो, इट इन एनी वे इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प योर सोल, है ना. और अगर आपकी बॉडी परेशान भी है, यू आर नॉट फीलिंग वेल, हाउ डज इट गोइंग टू अफेक्ट योर सोल? इज लाइक सोल इज डिफरेंट. द इनर मैन इज entirely different from the outer man. ठीक है. He says man is composed of a twofold nature, spiritual and bodily. As regards the spiritual nature, which they name the soul, he is called the spiritual inward new man. As regards the bodily nature, which they name the flesh, he is called the fleshly outward old man. ठीक है. The apostle speaks, thou our outward man perish, yet the inward man is relieved day by day. कि जो हम भी कहते हैं ना कि जो बॉडी है वो पेरिशेबल है ना, वो खत्म हो जाती, पर आत्मा नहीं. The result of this diversity is that in the scriptures opposing statements are made concerning the same. So now he's like, you are confused, you as human being are confused when you read about man in scriptures. तो आपको वहाँ पे you cannot differentiate कि ये outer man की बात हो रही है या inner man की बात हो रही है. The fact being that in the same man these two men are opposed to one another. ठीक है, एक ही आदमी के अंदर कहता है ये दोनों की एक कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, फ्लैश की और स्पिरिट की. ठीक है. सो नाउ ही इज लाइक, सिंस देयर इज सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन दैट यू हैव व्हेन यू रीड द स्क्रिप्चर्स अबाउट मैन, नाउ आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट actually means by the inward man or the inner man or the soul. ठीक है. He says that it is certain that absolutely none among outward things, under whatever name they may be reckoned, has any weight in producing a state of justification and Christian liberty. जैसे मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, कि आपकी बॉडी किसी भी स्टेट में है, किसी भी कंडीशन में है, इट इन नो वे इज गोइंग टू अफेक्ट योर सोल.
ठीक है, और ना ही आपकी जो सो कॉल्ड चैरिटी है, जो है आप दान दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, पर अंदर से इफ यू आर you do not believe in God, all these so-called deeds of charity are not going to help you. That's the point Martin Luther is trying to make in this text. ठीक है, whatever I'm teaching अभी तक you have understood, no? Give me just bit of feedback in the chat box. अब समझ में आ रही है ना बात जो मैं कर रही हूँ? हाँ चलो ठीक है, I'll continue then. And then see, look at this statement. He says, what can it profit the soul that the body should be in good condition, free and full of life, that it should eat, drink and act according to its pleasure, when even the most impious slaves of every kind of vice are prosperous in these matters? है ना? तो कहता है कि काफ़ी जो लोग हैं जो इंडल्ज रहते हैं अपने बॉडीली प्लेजर्स में, आप बताओ मतलब उनको किस तरह से हेल्प कर रही हैं ये चीज़ें उनकी सोल को, है ना? If you believe in eat, drink and be merry, so how does it affect your soul? And if you are hungry, thirsty, है ना, and you are doing something like with your body, you're killing somebody in a way, so how is it going to impact your soul? ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो बॉडी से आप जो भी चीज़ें कर रहे हो आउटवर्डली, it has nothing to do with your soul. And so it will profit nothing that the body should be adorned with sacred vestments or dwell in holy places or be. ये हमारी जो इंडियन थियोलॉजी है, और स्पेसिफिकली अगर आप गुरबानी में भी देखे हो, है ना, तो वो कहते हैं कि आप गंगा नहाने चले हो तो बट दैट वुंट प्यूरिफाई योर सोल, so that's what he's saying. Dwelling in holy places, going to church every Sunday won't do you any good if you do not believe, if you do not have faith in God, right? And see, fasting or abstaining from certain meats or whatever work can be done through body and in the body, ये चीज़ें कुछ भी, मांस नहीं खाना, गंगा नहाने जा रहे हो, फास्ट कर रहे हो, सेक्रेड ऑफिस में जा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी सोल को हेल्प नहीं करती. दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से हियर. ठीक है, बट what will be important, he says something widely different will be necessary for the justification and liberty. You can liberate your soul, but by not these means, but by something else that he will explain further. ठीक है, he says that it will not at all injure the soul that the body should be clothed in profane raiment, should dwell in profane places, should eat and drink in ordinary fashion, should not pray aloud. है ना, अगर आप ऐसा भी करते हो कि आप चर्च नहीं जाते हो, प्रेयर नहीं करते हो, ये चीज़ें भी आपकी उसको हेल्प नहीं करेंगी. ठीक है, अच्छा ये चीज़ें कौन करते हैं कि हर रोज़ एवरी संडे यू गो टू चर्च एंड यू प्रे लाउडली सो दैट अदर पीपल विल हियर दैट यू आर मेकिंग ए प्रेयर. दिस इज डन बाय द हिपोक्राइट्स, पीपल हु want to like pretend or behave like a religious person but they are not. Okay, so he is like one thing and one alone. ये एक important point है उसका. This is what he is trying to emphasize at. He says one thing and one alone is necessary for life, and that is justification and Christian liberty, and that is the most holy word of God. Like you can attain liberty or justification by the word of God. Like I told you, the Protestant believed that people should have a direct access to the Bible. They should read the word of God themselves and should try to understand that. Okay, there shouldn't be any mediator between them. There shouldn't be any priest telling them this is what the Bible means to say. They were like, they should be, people should have this kind of freedom to access these texts on their own. ठीक है, and now in order to justify what he is saying, he would cite Jesus Christ here. He quotes Christ here who says, I am the resurrection and the life. He that believeth in me shall not die eternally. ठीक है, कि मैं ही लाइफ हूँ और मैं ही डेथ हूँ, और जो मुझ में विश्वास करते हैं they will never die. So now he is like, it is not about body but about soul. If the Son shall make you free, you shall be free indeed. So what is Bible actually? Bible is word of God. ठीक है, जहाँ पे भी वो word of God word use कर रहा है, you have to understand he means to say Bible. Okay,
सो वहीं से वो कोट कर रहा है स्क्रिप्चर्स में से, ठीक है। तो कहा कि वहाँ पे उस जॉन की जो है इंटरप्रिटेशन, वहाँ पे भी उसने उसकी भी इंटरप्रिटेशन को यूज़ किया है, which says that if the Son shall make you free, you shall be free indeed. That it is only Christ or the Word of God that can set you free, that can set your soul free. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. That you cannot survive merely on bread, on food. Okay, you need something else as well, and that is Word of God. So he's like, now the soul can do without everything except the word of God. Okay? So now he's emphasizing on the word of God. So now let's summarize a little bit whatever we have read so far. We have talked about this idea called freedom of a Christian. You know, in the beginning of the text, he, gave you this kind of question, a contradictory statement. He says a Christian is completely free and is a servant to no one, but at the same time, a Christian serves each and everyone. Okay, and then he kind of explained this statement, like how can a Christian be free? ठीक है, and then he said a Christian cannot be free by doing works or by doing anything that has something to do with the body. ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट करता है आउटर मैन और इनर मैन में, क्योंकि वो ये कहना चाह रहा है कि आउटर मैन दैट इज अपनी बॉडी से आप वट एवर यू डू दैट नो वेयर गिव्स यू साल्वेशन, दैट नो वेयर ब्रिंग्स यू क्लोजर टू फ्रीडम ऑफ योर सोल. So that's what. So abhi tak what we are reading now we were reading about the importance of the word of God, because only this thing can bring freedom to a Christian soul. And then he says to preach Christ is to feed the soul, to justify it, to set it free and to save it if it believes the preaching. ठीक है, if you have faith. आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो किस तरह से फेथ की जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है इन द लाइफ ऑफ ए क्रिश्चियन, उसकी कैसे बात करता है ना. तो जो फ्रीडम ऑफ ए क्रिश्चियन है, इट सोलली डिपेंड्स अपॉन फेथ, faith in the word of God. And then he says, for the word of God cannot be received and honored by any works but by faith alone. Again he is talking that works means जो चैरिटी करते हो आप, जो दान करते हो या कुछ और एक्सटर्नल चीज़ें, मतलब चर्च जाते हो, ध्यान आपका है नहीं, मानते आप है नहीं हो गॉड को, है ना, पर आप लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं ये लोगों को खाना खिला रहा हूँ, मैंने ये गरीबों को कपड़े दे दिए, ये सारी चीज़ें यू आर डूइंग. सी दीज आर गुड ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर सोल, ही सेज. ठीक है, सो ही सेज हैंस इट इज क्लियर दैट एज द सोल नीड्स अ वर्ड अलोन फॉर लाइफ एंड जस्टिफिकेशन, so it is justified by faith alone and not by any works. ठीक है, faith cannot consist at all with works. ठीक है, faith एक अलग चीज़ है और works जो आपकी बॉडी, जो आउटर मैन करता है, वो एक अलग चीज़ है. ठीक है, faith जो है it has something to do with the inner man. Okay, तो क्या कह रहा है वो, since then this faith can reign only in the inward man. ठीक है, कि inward man can only, that is your soul can only contain faith. उसको जो आप चैरिटी करते हो उसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, then he says it is evident that no outward work or labor can the inward man be at all justified. No outward work or labor can the inward man be at all justified, made free and saved. ठीक है, कि आप जो भी बाहर के काम कर रहे हो, जो भी लेबर आपकी बॉडी कर रही है, that cannot save or set your soul free, that cannot justify the inward man, that cannot set the inward man free, that cannot save the inward man. That no works whatever have any relation to him, that is the inward man. Therefore, the first care of every Christian ought to be to lay aside all reliance on work. You may mark these lines. ठीक है,
So the first care, that is first job of every Christian ought to be to lay aside all reliance on work and strengthen his faith alone more and more, and by it grow in the knowledge of not works but of Christ Jesus. कि क्राइस्ट जीसस में अपना जो फेथ है वो बढ़ाना है. जो वर्क्स आप कर रहे हो चैरिटी के, उनकी लिस्ट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा. आप समझ रहे हो ना. अब कॉन्टेक्स्ट भी आपको समझ में आ रहा है कि क्यों लिख रहा था ये सारी बातें, क्योंकि उस टाइम में रोमन कैथोलिक चर्च में इस तरह की चीज़ें हो रही थी एंड ही वॉज अगेंस्ट इट. ही वॉज लाइक पीपल आर बीइंग befooled. People don't know the real truth. People do not know how to attain salvation. They don't know how to justify themselves to God. Okay? They are blindly following what the priests are teaching them or dictating them, to put it in a more appropriate way. You must have watched this movie called Oh My God. उसमें एक dialogue है which is so like important. You see, he's like, these are not God believing people, they are God fearing people. They're scared. So this is what priests do, है ना. These middlemen between God and people, ना. तो they would scare you. So that's what he's saying. वो आपको कहते हैं कि ऐसे करो, दान करो, ये करो, वो करो. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ही इज रिजेक्टिंग ऑल दैट एट द आउटसेट. इज लाइक इन सारी चीज़ों को साइड कर दो, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू protect your soul. They are not going to bring any kind of salvation to your soul. Are there any, dear ma'am, please elaborate as a story to us so that we can This is not a story, first of all. This is an article, like I told you in the beginning. Does it also impact contempt? There are so many questions which I could not read. Just let me give it a look here. Does it impact literary? How does this text negate the biblical law in general? What were its socio-political implications? Did it also impact contemporary literary trends? What else? I believe we can all read the text. Kindly discuss the peripherals which are not anywhere else available. Please elaborate as a story. Real not getting anything. I don't know whether it is feedback of all of you or some of you, but I am not here trying to read the text. Actually, I was just reading the important paragraphs from the text in order to elaborate what we are doing here. In the beginning, I have also summarized my lecture, I think only few minutes back, where I said like what we are trying to discuss in this text. ठीक है. Point is, I don't know how many times I'll have to repeat this in the class. In the beginning, maybe you have joined late. That is why you're not able to, and that is why you could not understand the socio-political implications that we talked in the beginning. I discussed with you that at that time, this was the political, socio-political environment. ठीक है, political unrest was there. The society of those times was predominantly, dominated by the theological ideas. A king would also take into consideration the opinion of the church, right? So it was important. So these kind of things were happening at that time. And at that time, Luther, was sacked from his position, because they were like, he's writing he was trying to bring some kind of reformation. He was trying to make some kind of reforms in the way the church works. Okay, and in order to take back his position and also to explain his own ideas, Luther wrote this in the form of a letter to Pope Leo X, who was the Pope in the Roman Catholic Church at that time. Okay, and after that he starts talking about, he's like, here in this letter I've talked about what actually, how actually the Christians can attain freedom. ठीक है. और पहली बात वो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्रिश्चियन फ्रीडम की बात करता है, where he gives this contradictory statement and at the same time explains it, and then he talks about twofold nature of man. He's like, so far in scriptures, there is this discussion about man, okay, या एक आदमी के बारे में लिखा है, but you are not able to comprehend
So you have to understand that there are two kinds of men, inner and outer, that is body and soul. And then he rejects, he talks about futility of works, which the church of that time or the priest of that time were preaching people. ठीक है, so he talks about futility of all those kind of works. ठीक है, and he says that only the word of God can bring you some kind of salvation. Okay, and then he talks about the importance or the significance of faith in, अब टेक्स्ट का कंटेंट यही है, व्हाट एल्स आई कैन टॉक अबाउट, if you have to talk about the ideology, you have to understand it. We haven't even read the discussed the entire text and you are talking about other things, other aspects. You're so impatient, but that's okay. I respect, I take up all the questions, and after winding up the text we have many more lectures to come. We'll discuss the other aspects of this text as well. Okay, so and then he talks about futility of works, which I have discussed with you here. And then he talks about two kind of testaments, Old Testament and New Testament. ठीक है, and he says in one of the testaments precepts are given, which are actually instruction, and the New Testament deals with the promise of God. Okay, and then for this purpose I'll have to again go back to the text. So what he is trying to say, he has given his own justification of what he is saying, and for this purpose he had to cite like from the text, उसने बाइबल से या ओल्ड टेस्टामेंट से या न्यू टेस्टामेंट से जो भी whatever information he could sort, he has written in the text. ठीक है, उन लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि जो भी मैं कह रहा हूँ, जैसे कल वाइफ ऑफ बाथ का आपने पढ़ा था, है ना, तो शी was not that accurate, but in a way, in order to justify her point, she had given some kind of evidence from the text. Okay, similarly, this is what Luther is trying to do. ठीक है, he says it is to be noted that the whole scripture of God is divided into two parts. ये उसका next idea है. ठीक है, अभी तक आपने फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन का क्या मतलब है ये देखा, फेथ की सिग्निफिकेंस का देखा कि कैसे वो जो फेथ है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है, और उसके बाद ही टॉक्स अबाउट टू काइंड्स ऑफ मैन, inner and outer, and then he talks about the scriptures of God. He says these are divided into two parts, the precepts and the promises. Precept stands for the various instructions, ठीक है, and the other one contains the promises of the God. The precepts certainly teach us what is good, but what they teach is not forthwith. That yes, you are given some kind of instructions in the Old Testament, but how to achieve that? They would say love thy neighbor, or you shall not covet. But it's like, from where would we get that kind of strength to not to do that? Okay, and that's where we would need the other part or the New Testament. Okay, with the promise of God, with the word of God, we can strengthen our soul that much that we won't covet or we won't do any misdeed. ठीक है, तो इस तरह से वो आपको डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट, एंड बाय citing these two kind of testaments or precepts and promises, he is again trying to re-emphasize on this idea that only the word of God, ठीक है, can bring can set the Christian soul free. And next we have the concept of justification by faith. This is the next idea he takes up in the text. Okay, there are some questions again. मैम हिंदी च बोलो, really not did it also impact slide? I don't know what you all are writing. I want some feedback. अभी तक जो भी मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया?
there are 138 students and some two comments I've got here कि हिंदी में मतलब इसमें मतलब इतना हिंदी में मुझे लगता है बोलने वाली क्या ही बात है ना। एक्चुअली ये बहुत सारे आइडियाज, अब एक एक आइडिया आप हिंदी में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, आप ये चीज़ समझने की कोशिश करो प्लीज़। आइडिया सिर्फ इतना है कि जो वहाँ पे बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी उस टाइम की चर्च में, रोमन कैथोलिक चर्च में, उनके खिलाफ लिख रहा था, ठीक है। और उसने जो एक रिलीजन है उसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स है उनकी बात की है ना। और वो कहीं ना कहीं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप जो साल्वेशन है, जो मुक्ति है, जो है ना, कुछ भी उसे कह सकते हैं, वो कैसे अटेन को, वो कैसे पा सकते हो। तो वो कह रहा है कि जो वर्ड ऑफ गॉड है दैट इज डायरेक्ट एक्सेस टू द बाइबल, जो मीडिएटर है उसको खत्म करने की बात कर रहा है ना। प्रीस्ट प्रोटेस्टेंट जो रिलीजन है उसके बारे में आप पढ़ लेना, आज आपको समझ में आ जाएगी बात, है ना। वो कहते हैं कि जो प्रीस्ट है या पादरी है उसका रोल खत्म करो और पीपल शुड हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द बाइबल, लोग अपने आप पढ़ें और उसको समझें, ठीक है ना। बात ये हो रही है, डू वी हैव टू राइट इन सेम वे इन आर एक्सेंट, present link, what are you, I just request you compare relevant digressions from mainstream Roman Catholic so that we have a more comprehensive. I just request you please show futility of faith slide once again. Futility of faith नहीं था, futility of work था, बाकी I'll show you. There was one more question regarding, one second, I'm not able to. Relevant, could you compare relevant digressions from mainstream Roman Catholicism so that we have a more comprehensive understanding? Do you think that you have put your questions in a right manner? Because मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है कि रोमन कैथोलिक चर्च में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। एक तो ये है कि जो प्रीस्ट थे या पोप थे, दे वर इंडल्जिंग इनटू लेविश लाइफ, है ना। और जिस तरह से वो रह रहे थे और जिस तरह से वो अपनी पोजीशन को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ठीक है। इसके बारे में आप और पढ़ सकते हो अपने आप। मैं प्राइमरी देखो, एक जो चीज़ आप समझने की कोशिश करो कि जो टेक्स्ट है और जो टेक्स्ट के इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ हैं उसकी बात करना बहुत ज़रूरी है। एंड यू सी दिस इज़ द लास्ट कॉन्सेप्ट, द जस्टिफिकेशन ऑफ फेथ। तो जब आप पूरी टेक्स्ट की एक ओवरव्यू दे देते हो उसके बाद यू कैन टेक अप द क्वेश्चन और आप उसके बाकी के आइडियाज़ को डिस्कस करना ईजी हो जाता है। कुछ बच्चे हो सकते हैं एडवांस जिन्होंने पढ़ लिया, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे सुन रहे हैं, उनके लिए वो हर छोटी से छोटी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। So when you try dictating a teacher that she should do this or not do that, try to understand each and every student has different kind of requirement and we have to take care of the overall thing, ठीक है। When you will go back, most of you, maybe a few of you will be able to read the text and understand on your own, but there are some who won't be, ठीक है। But I always say I never discourage students from asking questions because that makes my class more interactive. But this was little piece of advice that I had for you. And then listening this for the first time. Yeah, that's okay. This was the last concept anyways. I'll talk about that as well. In the meantime, I'm just trying to, kind of answer the questions that I had here. है ना। तो आपने ये पूछा था कि रोमन कैथोलिक एंड द प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है, ये आप खुद पढ़ोगे जाके एंड यू कम टुमारो विद योर क्वेश्चंस। पर फिर भी मैं आपको इतना जो सबसे लार्ज डिफरेंस, जो सबसे प्रोमिनेंट डिफरेंस है, दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू, दैट द कैथोलिक रोमन कैथोलिक चर्च वुड एम्फसाइज अपॉन अ वेरी काइंड ऑफ ऑर्थोडॉक्स, और हम इसको क्या कहते हैं, कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है। कि एवरी संडे यू हैव टू गो टू चर्च, ठीक है, एंड यू वुड प्रैक्टिस चैरिटी, ओके, एंड यू वुड हैव, यू वुड रिस्पेक्ट द पोप एंड यू वुड हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन द रोमन चर्च,
ठीक है, and people just cannot do without pope or the priest. On the other hand, in case of Protestants, they wanted to eliminate the role of the priest. I'll see to it. पहले आप कुछ बात सुनने की तो कोशिश किया करो जो मैं बात कर रही हूँ, अपने ही मतलब कमेंट्स आप समझने की कोशिश करो अब, क्योंकि आपने एक सवाल पूछे हैं एंड आई एम पुटिंग सो मच एफर्ट्स. ठीक है, बात सुनो पहले, पीपीटी की बात छोड़ो. तो ये प्रोमिनेंट एक डिफरेंस है, ठीक है, कि वो एक एलिमिनेशन ऑफ ये जो है, आप पीपीटी देखना चाहते थे, ठीक है. तो एलिमिनेशन ऑफ प्रीस्ट की बात करते हैं, वो उनका जो रोल है. एंड दे जो द प्रोटेस्टेंट बिलीव्ड इन द डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द बाइबल टू द पीपल. ठीक है, वो चाहते थे लोग खुद इसको समझें. ये एक बहुत ही मुझे लगता है एट द आउटसेट आप एक डिफरेंस इनमें देख सकते हो दोनों फिलॉसफीज में. इससे ज़्यादा तो व्हाट कैन वन टेल, है ना. सो दिस इज़ वाई दिस टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, because of Martin Luther's dissent, because he protested against these kind of moral practices which were going on in the Roman Catholic Church, or the name of the Roman Catholic Church. He was against all this, okay, and he wanted the church to purge off all these kind of ill practices, and this was actually the beginning of the Reformation movement. ठीक है, Reformation, because it was trying to bring some kind of reforms in the Roman Catholic Church. But later these two became two different streams. One, set of people who still believed in the dominance of the Roman Catholic Church, and there were others who became Protestants, those who did not believe in the authority of the church, ठीक है, who believed only in the word of God. You read the text that I've sent you. You'll get to know who was Pope Leo. I've explained thousands of times. All right. And then, okay, futility of this is the work of God, that you believe on Him. So he's like, outward work cannot bring you any kind of salvation, but work of God, that is word of. I had to write word of God here. Okay, that if you believe in the word of God, then you will get some kind of salvation, not with works, okay, but with the work of God. That means word of God. That is क्या है काम आपका? बिलीव करना भगवान में, faith in God. ठीक है, that's what it is. Is there any other question? आपको this student who had asked me to differentiate between word of God, because he has used this particular term in the text, and this I had explained in the beginning of the lecture, that wherever he says word of God, it means to say Bible. And you should mind your language, with whom you are talking. Can't you write Bible? What is this? If I am being polite, that does not mean you would forget who you are. I won't accept this kind of behavior in future. In the text, Martin Luther refers to Bible as the word of God. That is the word spoken by the God himself. All right? Is there any other question? That's okay. Please take care in future. You are students of language and you have to understand. And it's okay. We'll leave this matter here itself. Okay, the last slide was, ये जो भी आइडियाज़ आपको पीपीटी में दिख रहे हैं, इन्हीं पे बेस्ड आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा. ठीक है, आई एम नॉट ए फूल थ्रोइंग हिंट्स हियर एंड देयर फॉर यू. सम ऑफ यू थिंक दैट मे बी I am just passing time here by reading the text. I know my job and I know what I am doing. Okay, you're free to write your feedback. And I am also recording my lecture. I am not doing a, this time pass here. Try to understand this thing. You are free to ask question. You are free to
give your comments. I respect that. I would always encourage my students to ask question, but at the same time, do not pass judgments before listening the entire lecture. I am not delivering my lecture for one student who is well versed with the text. I make my lecture, I prepare my lecture with this situation in mind that there are some students who do not understand, ठीक है, who do not know about the text at all. I begin from scratch, okay, and when I wind my lecture, I would really appreciate that all of you ask me questions. I am all there. I can explain it hundreds of times, but at the same time, please be mindful that don't pass any judgments before listening the lecture. ठीक है, मैं अभी सेकंड स्लाइड पे हूँ और मैं टेक्स्ट में से आपको कुछ कोटेशंस पढ़ के सुना रही हूँ. आपको पता भी है व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू वुड गेट. आपको टेक्स्ट में से एक लाइन उठा के डाल देंगे and then they'll ask you to elaborate his ideas in the light of this statement. How would you do it if you not read the text? But that's okay. Do not think that I am feeling like bad about it. I'm just trying because since you are the beginners, है ना, आप नए आए हो, आपको पता नहीं है कि ये हायर एजुकेशन में आपको किस तरह से, एमए में आपको किस तरह से के सवाल आते हैं. ये बीए या +2 वाला काम नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस आपको प्री गिवन होंगे आपकी टेक्स्ट बुक में और आपने वही प्रिपेयर करने हैं. आपको जो टेक्स्ट के बेसिक आइडियाज़ हैं वो समझने पड़ेंगे. ठीक है, अब मान लो आपको ये क्वेश्चन आ गया कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आइडियाज जिनकी बात करता है. हाउ वुड यू एनलिस्ट दैट? ठीक है, मैं बार बार शुरुआत से जब से मैंने लेक्चर शुरू किया है आई एम रिपीटिंग इट, आई एम समराइजिंग इट कि पहले क्रिश्चियन फेथ की बात करता है एंड देन ही टॉक्स अबाउट टू फोल्ड नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ओके, एंड देन ही टॉक्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फेथ. आपको पता है इंपॉर्टेंस ऑफ फेथ पे आपको असाइनमेंट में भी क्वेश्चन. तो मतलब who are you to evaluate like what is important and what is not? What is this question Steffi is asking? What is that? There is something different that you told today. I cannot see the previous questions. Faith in God. Ma'am, please tell. We will be getting this PPT on mail. Ma'am, I have a question. Can I unmute? You guys must be, she is doing overview of the text. Nice overview. It will be easy to go through the text now, but there is something different. Steffi, you will have to write in the chat box only because if I'll unmute, there are 135 students and there will be chaos in the class. इम्पॉर्टेंट टर्म्स कौन सी? टर्म्स कुछ नहीं है बच्चे, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको दूंगी, आप उनको प्रिपेयर कर लेना. पर यहाँ पे कभी भी ऐसे नहीं होता कि जो मैंने बोल दिया वही आएगा. आपको कुछ भी आ सकता है. आपको टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ठीक है, ऐसे कोई प्री गिवन क्वेश्चंस नहीं है कि उन्हीं में से आएगा. अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा है तो यू वुड बी एबल टू डू इट, या फिर आपने जो टेक्स्ट के जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं उनकी आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ठीक है, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन है. आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे. आपके फाइनल एग्जाम की बात कर रही हूँ. 5 यूनिट्स में से आपको 2-2 क्वेश्चंस आएंगे. आपको चॉइस होगी. इन टोटल आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं. आई थिंक 16 नंबर का एक होगा, 80 नंबर का आपका पेपर है. ठीक है. How to attempt questions? Please give some idea because I am from science background. That I'll tell you. Ma'am, can we write in our own language? Yes, you can write in your own language, but you should be grammatically correct. And the terminology which is used in the text, you'll have to use that as well. अब देखो ये चीज़ जो पूछ रहे हैं ना कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ठीक है, मान लो आपको यही क्वेश्चन आ गया कि हाउ व्हाट डज मार्टिन लूथर मीन बाय द फ्रीडम ऑफ ए क्रिश्चियन. ओके, एंड देन you know in a way you will have to write all the important ideas that we have discussed today. You know, you'll start from here.
Like according to Martin Luther, a Christian man is most free lord of all and subject to none. You will also have to write the quotations at time. If you can memorize them, that will bring you good score. ठीक है, अगर आप कोटेशंस भी वहाँ पे कोट करते हो ना, तो आपको जो एग्जामिनर है उसको लगता है कि आपने टेक्स्ट को पढ़ा है. ठीक है, और अगर आप नहीं याद कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आपको वो आइडिया आपको याद होना चाहिए, है ना. तो फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन दिस क्वेश्चन दैट हाउ डज मार्टिन लूथर स्पीक्स अबाउट और टॉक्स अबाउट और डिस्कसेस द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन और व्हाट अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर इज द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन, देन यू वुड हैव टू डिस्कस ऑल द आइडियाज दैट आई हैव डिस्कस्ड टुडे. You know, first of all, you'll discuss what, according to him, is a Christian freedom or freedom of a Christian, and then you'll talk about twofold nature of man, because these are all interrelated. है ना? How would you justify like what he has said? You know, so then you would say, in order to justify that the outer works won't help you in any way, but only the word of God or faith in God can bring you salvation, then you will talk about that, and then you'll also, मतलब in sort of paragraphs you'll have to divide your ideas. ठीक है, जैसे आपने पहले पैराग्राफ में क्रिश्चियन फ्रीडम के बारे में लिख दिया, इन द सेकेंड पैराग्राफ यू टॉक अबाउट टू फोल्ड नेचर ऑफ मैन, इन द थर्ड पैराग्राफ यू टॉक अबाउट वर्ड ऑफ गॉड, you know, and how the word of God and not you know, the works, the external works that we indulge in would bring salvation to our soul. This may be your third paragraph, and in the fourth paragraph you would talk about faith. You can write that then Martin Luther talks about the importance of faith, you know, in the life of a Christian. All right, and then you can talk about, in the next paragraph you can talk about this idea called futility of works, that no outward work can bring freedom to a Christian. Okay, and then in the final you can also talk about that he gives you know, threefold power of the justification by faith. ठीक है, ये लास्ट आइडिया है. आई जस्ट आपको समझ में आ गया होगा अब क्वेश्चन भी कैसे लिखना है. ठीक है, तो आइडिया वाइज आपने पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है अपने आंसर को. हाँ, आई विल गिव यू क्वेश्चंस. ऑलराइट, तो अच्छा ये चीज़ है, तो ये लास्ट चीज़ है, बस हम ये डिस्कस करेंगे एंड देन आई विल वाइंड अप. ओनली 3 minutes आर लेफ्ट. ठीक है, तो ये 3-fold पावर है. पहले में बात कर रहा फेथ फ्रीज फ्रॉम द लॉ, दैट इज दिस फ्रीडम डज नॉट लीड अस टू लिव लेजी एंड विकेड लाइव्स व्हिच मेक्स द लॉ एंड वर्क्स अननेसेसरी फॉर साल्वेशन. है ना, कि किस तरह की फ्रीडम है ये, किस तरह की फ्रीडम देती है ये जो फेथ इन गॉड है, हमें किस तरह की फ्रीडम देता है. ठीक है, इससे हम जो लेजी और विकेड लाइफ, जिस तरह की लाइफ उस टाइम के पोप या उस टाइम के प्रीस्ट जी रहे थे, ठीक है, लाइफ ऑफ लग्जरी विच इज़ नॉट गुड फॉर ए क्रिश्चियन. इज इज लाइक उसका आपकी सोल के साथ कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, बट एंड दे विल नॉट ब्रिंग यू साल्वेशन बट ओनली फेथ इन गॉड. ठीक है, इट फ्रीज फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ लॉ. व्हाट काइंड ऑफ लॉ इट इज? लॉ जैसे चर्च का लॉ है कि आपने संडे को यू हैव टू विजिट चर्च, है ना, या फिर इस तरह की जो चैरिटी करनी है, ये करना है. तो इट फ्रीज फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ लॉज. जो फेथ होता है आपका, अगर आपकी आत्मा में आप बिलीव करते हो भगवान में, तो आपको इस किसी तरह के लॉ से डरने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. एंड देन ही सेज फेथ ऑनर्स गॉड बाय ट्रस्टिंग इन हिम अलोन, by ascribing to him the honor of being truthful to his promise. ठीक है, faith honors God by trusting him here with capital HUFC, है ना. तो यहाँ पे ये God के लिए ये जो एक प्रोनाउन यूज किया गया है. ठीक है, faith honors God by trusting in him alone. ठीक है, सिर्फ भगवान में विश्वास करना है. and by ascribing to him the honor of being truthful to his promise. promise that is क्या है? न्यू टेस्टामेंट, कि उसमें जो चीज़ें लिखी हैं उनको अच्छे से समझना, उनको फॉलो करना है. फेथ यूनाइट्स द सोल विद क्राइस्ट जस्ट एज ग्रूम इज यूनाइटेड विद हिज ब्राइड बाय सोमन वाव. तो लास्ट जो आइडिया वो ये है कि अगर आप क्राइस्ट में फेथ रखते हो, अगर भगवान में फेथ रखते हो, तो यू आर यूनाइटेड विद गॉड लाइक अ ब्राइड इज यूनाइटेड टू ए ग्रूम. ठीक है, थ्रू this marital vows and or pious or precious or whatever you can say religious ceremonies. ठीक है, तो आप इस तरह से भगवान के साथ एक हो जाते हो. इस तरह का ये आइडिया उसने लास्ट में दिया है. ठीक है,
intellectual subtlety, research aptitude in this program. Who is it? Do we need to have textual competence to see? I don't know like how to explain it. Point is, most of the usual students, they are working, and often they'll tell you that they are working, so they don't have much time to read the text. ठीक है, so it is उसमें वर्डिंग है वो लर्न करनी पड़ेगी. पता है क्या है पूनम, आप ये समझने, टेक्स्ट में से आपको, जैसे हर एक टेक्स्ट में से आप 2-3 इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं जो आप लिख के उनको मेमोराइज अगर आप कर सकते हो तो आप कर लो. अगर आपको नहीं याद होती हैं, सम पीपल आर नॉट गुड एट क्रैमिंग थिंग्स, तो आप फिर उसके आइडियाज़ याद कर लो. पर आई एम जस्ट टेलिंग यू द वे टू स्कोर वेल. ठीक है, हाँ. और आपने जो भी टेक्स्ट में से कोट करना है उसको आप इन्वर्टेड कॉमाज में लिखोगे, जैसे मैंने अपनी पीपीटी में लिखा है ना. इफ आई एम साइटिंग, सी यू लुक एट दीज लाइन्स दैट हैव टेकन, है ना. अपने पेपर में भी अगर आप टेक्स्ट में से कोट कर रहे हो तो आप उस कोटेशन को इन्वर्टेड कॉमाज में लिखोगे, जिससे एग्जामिनर को भी ये पता चलेगा कि आप मतलब ये टेक्स्ट में से कोट कर रहे हो. ठीक है. After a PCP is over, we can also do this exercise like unofficially. You can write a question or two and you can send it to me through email. I can tell you like how to attempt. ठीक है, तो ये चीज़ है. ये आपका अटेंडेंस लिंक है. दोबारा, एज आई प्रॉमिस्ड यू, दोज हु हैव नॉट मार्क देयर अटेंडेंस येट, दे कैन मार्क इट. तो अपने आइडियाज़ की फॉर्म में डिवाइड करना है पैराग्राफ्स को. ठीक है, वन आइडिया इन वन पैराग्राफ, अनदर आइडिया इन अनदर. इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है, कोई पॉइंट्स नहीं बनाने हैं. और आपने अगर टेक्स्ट में से आपको कोटेशन याद हो रही है तो 1-2 कोटेशन एक आंसर में अगर आप कोट करोगे, यू मे स्कोर वेल. ठीक है. I'll keep on giving more inputs on like how to attempt questions, and I'll also give you important questions on this text tomorrow. And what else was there? So we are done. If there's anything you come out with more questions on this text, I'll take that all tomorrow. And tomorrow we'll talk about another text. I'll tell you tomorrow. ठीक है, that's all for today. Have a good day. You're welcome.